नमस्कार बंधुगण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएनटी एजुकेशन। जय जगन्नाथ। ओडिशार अगणित शिक्षक शिक्षयित्री मानकु पवित्र रथ यात्रार हार्दिक अभिनंदन। आसंतु आज पुणे एक नुआ अपडेट जहाँकि रही स्पेशल ओटीटी एग्जाम 2025 इंग्लिश पेडागोजी यूनिट 3 आपन को पूर्व मु अवगत करिछि। आपनकर इंग्लिश पेडागोजी रे मात्र 4टी यूनिट अच्छी। मु 2टी यूनिट रो थियोरी विथ प्रोबेबल क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करिछि मो बीएनटी एजुकेशन माध्यम रे। तबे आसंतु आज यूनिट 3 रे देखिबा कोन रहिछि। यूनिट 3 रो टॉपिक कोन रहिछि देखंतु। यूनिट 3 रे बेसी थियोरी नाही। आपनकर 1 1 2 3 एंड 4 टॉपिक रहिछि। ए चारटा टॉपिक माध्यम रे हम यूनिट 3 कवर करिवु एवं यूनिट 3 रो जते प्रोबेबल क्वेश्चन अछि ताको आलोचना करिवा। देखो यूनिट 3 रे रहिछि फोरफोल्ड बेसिक स्किल, देन रहिछि टेक्निक एंड एक्टिविटीज फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्पीकिंग स्किल, रिसाइटेशन स्टोरी टेलिंग और डायलॉग, देन डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल और रहिछि डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। तले आसंतु विलंब न करी आज इंग्लिश पेडागोजी रो यूनिट 3 रो थियोरी विथ प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर आलोचना करिवा। देखंतु यूनिट 3 स्किल इन लर्निंग इंग्लिश। एथिरे आपनकर फोरफोल्ड बेसिक स्किल ऑफ लर्निंग रहिछि जहाँकि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, जहाँ को हमें LSRW कहूछे। देयर आर 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल व्हिच एवरी लर्नर मस्ट मास्टर। दे आर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, दैट इज LSRW. Listening and reading are passive skill, whereas speaking and writing are active skill. First come listening. The pupil must understand the stream of sound and learn to discriminate between the different sound. Only then he will be able to speak, even though it may mean repetition word by the teacher at the initial stage. After speaking come reading. It is said that regular reading from the textbook should stand after about 2 months of annual oral practice. Last of all, come writing. It is said that especially during the first 3 years of teaching English, people should not be able to ask to read any language item which they have not already mastered in speech, nor should they be required to write any item which they have not already read. New item, therefore, should first be practiced in speech, then reading, and lastly in writing. Interdependence of skill. All the 4 basic language skills should be given due equal. No skill should be neglected at the cost of other. There is sometimes a tendency on the part of teacher to neglect listening and speaking because these skills are generally not tested in examination. On the other hand, some teachers devote too much time in listening and speaking and consequently neglect reading and writing. देन आसंतु प्रोबेबल क्वेश्चन आलोचना करिवा। 1 नंबर क्वेश्चन, अर्लियर लैंग्वेज वाज टॉट टू enable students dash to learn it, to use it in their literature, to appreciate and enjoy the literature even in school, or to get familiar with it. तले राइट आंसर होछि आपनकर 1 नंबर सी, to appreciate enjoy literature even in school. Listening and reading are considered as dash active skill, ना क्वासी पैसिव ना पैसिव ना क्वासी एक्टिव स्किल। देखंतु लिसनिंग एंड रीडिंग एगुडा होछि आपनकर रिसेप्टिबल, तेनो एटा आपनकर राइट आंसर होछि सी पैसिव। जेटा प्रोडक्टिव स्किल सेटा आपनकर होछि प्रोडक्टिव स्किलटा आपनकर एक्टिव, बट रिसेप्टिव टा होछि आपनकर पैसिव। तेनो 2 नंबर राइट आंसर होछि लिसनिंग एंड रीडिंग अछि। एटा आपण रिसीव करछन तेनो पैसिव स्किल, एटा होछि टेक्निक। देन आसंतु 3 नंबर क्वेश्चन ऊपर आलोचना रखिबा। 3 नंबर क्वेश्चन रहिछि आपनकर स्पीकिंग एंड राइटिंग। एटा प्रोडक्टिव होछि, तेनो एटा निश्चित भाबरे को स्किल हबो। ऑप्शन देछि पैसिव एक्टिव प्रोडक्टिव रिकॉग्नाइज। जे स्पीकिंग एंड राइटिंग एटा आपनकर प्रोडक्टिव होछि, किंतु
ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଉଛି एक्टिव स्किल। The most difficult skill in this reading ना राइटिंग ना स्पीकिंग ना लिसनिंग। मोस्ट डिफिकल्ट स्किलटा आपनकर होछि ऑप्शन डी राइटिंग। 4 नंबर राइट आंसर होछि ऑप्शन डी। देन आसंतु परवर्ती प्रश्न ऊपर आलोचना रखिबा। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन रे रहिछि आपनकर देखो 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन अछि it is said that especially during the first 3 year of teaching English pupil should not be able dash। 5 नंबर राइट आंसर कोटा हबो ना during the first 3 year pupil not be able to आपनकर read any language। 5 नंबर बी। देन आसंतु आसीबा 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न रहिछि न्यू लैंग्वेज आइटम शुड फास्ट बी प्रैक्टिसाइज इन डेज। न्यू आइटम टाको केमती हमें प्रैक्टिस करा पिक्चर रे ना स्पीच रे ना वर्ड रे ना एक्शन रे। तो निश्चित भाव में हमें न्यू आइटम टाको स्पीच रे ही प्रैक्टिस करबा। 6 नंबर बी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 ईयर मच अटेंशन इज टू बी गिवन टू डेज। 2 to 3 ईयर ऊपर मच अटेंशन हमें निश्चित भाव में देबा स्पीच प्रैक्टिस ऊपर। देन आपनकर अदर हमें देबा। 8 नंबर रहिछि लर्निंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज इज डेज। आपनकर ऑप्शन रहिछि नेचुरल प्रोसेस ना हैबिचुअल ना आर्टिफिशियल ना कस्टमरी। निश्चित भाव में एटा आर्टिफिशियल प्रोसेस। 8 नंबर सी व्हाइल एट द स्टेज ऑफ लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज द लर्नर हैज टू डेज। ए बी सी डी ऑप्शन रहिछि व्हाइल एट द स्टेज ऑफ लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज जता बेला हमें कोनसी फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग करूचे द लर्नर हैज टू कीप ए वे ऑफ हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिज मदर टंग। जते हमें फॉरेन लैंग्वेज प्रैक्टिस करबा निश्चित भाव में मातृभाषा टू टिके दूरे रहिबा। ये थिला 9टी प्रोबेबल क्वेश्चन। देन आसीबा परवर्ती यूनिट 3 रो परवर्ती टॉपिक कोन रहिछि ता ऊपर आलोचना रखिबा एवं प्रोबेबल क्वेश्चन देखिबा। टेक्निक एंड एक्टिविटीज फॉर डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। परवर्ती टॉपिक रहिछि लिसनिंग आ स्पीकिंग स्किल ऊपर। तले कोन रहिछि थ्योरी देखिबा। रिसाइटेशन रहिछि आवृत्ति। रिसाइटेशन ऑफ राइम इज एन इंपोर्टेंट एक्टिविटी फॉर beginner in English. The primary purpose of rhyme in lower classes is to make learner familiar with sound and sound patterns, stress and intonation etc. The rhyme, the action, the gesture and posture in reciting a rhyme encourage the learner to take part in the activity. A good exposure to appropriate sounds of English afford a sound base of speaking with correct pronunciation. Teachers should motivate pupil to go into the nursery rhyme like twinkle twinkle little star how I wonder what you are and action song that children could recite the same. While enjoying the music people get a scope to learn sound. Then as well storytelling. Storytelling in primary year played a vital role in the language development. Appropriate storytelling not only enhance the children's fluency or vocabulary but also increase the power of imagination. Storytelling develop creativity. Then as well dialogue. Listening comprehension can be developed by using dialogue. The teacher introduces the topic, then he gives one or two guiding questions. Then as a forward point, he reads the dialogue. The people listen to the main idea and answer the guideline question. Later, the teacher read a part of dialogue and asks question to check detail comprehension. The teacher read the dialogue once again with the people as described their book. The dialogue is the best part of text to teach spoken English. It is because in present language directly in the context in which is most commonly used. The dialogue accommodate within the framework many features of the spoken language and key features. The people participate actively in the lesson. देन आसीबा एई टॉपिक रो प्रोबेबल क्वेश्चन रहिछि जे एई क्वेश्चन गुडा ही बारंबार आपनकर ओटीटी रे आसुछि तेनो नो डाउट स्पेशल ओटीटी रे मध्ये यूनिट 3 रो इंग्लिश पेडागोजी रे एई प्रोबेबल क्वेश्चन आसीबो। तले आसंतु परवर्ती प्रोबेबल क्वेश्चन ऊपर नजर रखिबा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ राइम इन लोअर क्लासेस इज टू डेस। थ्योरी रे आपण माने देखिछंती जे प्राइमरी पर्पस कोन रहिछि राइम रो। निश्चित भाव में साउंड आ साउंड पैटर्न सहित फेमिलियर हवा। तेणु देखो ऑप्शन 4टी मध्यरु निश्चित भाव में साउंड एंड साउंड पैटर्न सहित फेमिलियर ऑप्शन रही ऑप्शन ए रे। तेणु 1 नंबर राइट आंसर होछि ऑप्शन ए।
Then 2 number question ଅଛି recitation of rhyme is an important activity for dash. Recitation of rhyme ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ important activity ଚାରିଟା ଅପସନ ରହିଛି for the pupil or the learner in English or the youth or the promised pupil. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ learner in English 2 number right answer ହେଉଛି option B. Then ଆସନ୍ତୁ 3 number right answer କଣ ରହୁଛି the rhyme, the action, the texture, the posture in relating a rhyme encourage the learner dash to take part in the activity, to develop sound pattern, to know difference between sound and sound pattern or show interest in them. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ activity ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ rhyme, action, texture, posture encourage करे ତେଣୁ right option ହେଉଛି 3 number option A. then ଆସନ୍ତୁ ଆସିବେ 4 number question. 4 number question ହେଉଛି teacher can present simple and short story with picture or visual. The children to read, the children to speak, the children to listen, children to use see. जेहेतु प्रेजेंट करूछंती शॉर्ट स्टोरी निश्चित भाବରେ स्टोरी जेहेतु होची लिसनिंग कथा आसीबो तेणु ये राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी. राइट आंसर होची ऑप्शन सी द चिल्ड्रन टू लिसन. 4 नंबर राइट आंसर होची ऑप्शन सी. 5 नंबर रिसाइटेशन स्टोरी डायलॉग प्रोवाइड सफिशिएंट स्कोप टू द लर्नर. जेतु रिसाइटेशन होची स्टोरी होची डायलॉग होची निश्चित भाବରେ कौन आपको स्कोप मिलिबो लर्नर को निश्चित भाବରେ लिसनिंग और स्पीकिंग स्कोप मिलिबो. तेणु 5 नंबर राइट आंसर कौन हो आपण माने जानि पारुछंती टू यूज स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑप्शन सी. 5 नंबर मध्ये ऑप्शन सी. देन आसंतु देखिबा 6 नंबर प्रश्न कोन रहिछि. 6 नंबर प्रश्न रहिछि टीचर कैन टेक हेल्प ऑफ सीडीज or containing rhyme, action song, stories to help children by making listening more enable or encourage them to develop or making listening and speaking earlier job or none of them. जेतु सीडी रो से माने लिसनिंग करूछंती निश्चित भाବରେ मेकिंग लिसनिंग मोर एन्जॉयबल हो नले आपनकर तेन 6 नंबर राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन ए. 7 नंबर एक्शन सॉन्ग हेल्प लर्नर. एक्शन सॉन्ग निश्चित भाବରେ हेल्प करियो कोन पई ना लिसन एंड एक्ट पई. एक्शन सॉन्ग जेहेतु रहउची निश्चित भाବରେ एक्टिंग ऊपर एम्फासिस रहइबो तेणु राइट आंसर होची ऑप्शन बी आपनकर लिसन एंड एक्ट ऑप्शन बी. देन आसंतु 8 नंबर प्रश्न को आसीबा. 8 नंबर प्रश्न डैश इज द बेस्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट पीस इन द लैंग्वेज. निश्चित भाବରେ आपनकर 8 नंबर राइट आंसर हो ऑप्शन सी. डायलॉग होची बेस्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट टू टीच द स्पोकन लैंग्वेज. स्पोकन लैंग्वेज जेतेबेले हम पिलां को टीचिंग दबा डायलॉग ता निश्चित भाବରେ बेस्ट मेथड हो तेणु राइट आंसर होची ऑप्शन सी डायलॉग. द टीचर एक्ट द डायलॉग व्हाइल डैश. केतेबेले एक्ट डायलॉग टीचर करिवे जेतेबेले प्यूपिल कोन करिवे ना शुणिबे एवं तांकर बही बंद करके शुणिबे तेणु ऑप्शन सी द पीपल लिसन विथ देयर बुक्स क्लोज. देन परवर्ती प्रश्न को आसीबा 10 नंबर प्रश्न द टीचर रिपीट द डायलॉग एंड पीपल्स फॉलो इट इन देयर बुक. केतेबेले ए घटना हबो आपनकर जेतेबेले व्हाइल दे लिसन जेतेबेले माने शुणिबे सेतेबेले ए घटना हबो. देन आसंतु परवर्ती थियोरी ऊपर नजर पकेबा एवं परवर्ती प्रोबेबल क्वेश्चन कोन रहिछि. डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल. ना देखंतु फ्लो चार्ट गुटे दिया है मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग. रीडिंग स्किल रे आपन दुईटा मेथड अछि गुटे लेटर मेथड आ गुटे नॉन लेटर मेथड. जदि हम लेटर मेथड को देखिबा देखन लेटर मेथड को हम देखिबा लेटर मेथड रे कोन रहिछि ना लेटर मेथड रे आपन अल्फाबेट मेथड रहिछि फोनिक रहिछि. नॉन लेटर रे कोन रहिछि ना से सेंटेंस रहिछि आ स्टोरी रहिछि. ए दुईटा मेथड आपनकर इंपोर्टेंट रहिछि टीचिंग रीडिंग. तेणु ए दुईटा मेथड को जदि हम देखिबा तले प्रथम रहिछि लेटर मेथड अल्फाबेट मेथड आ फोनिक मेथड. अल्फाबेट मेथड होछि इन अल्फाबेट मेथड फर्स्ट लेटर एंड देयर नेम्स आर टॉट टू द पीपल देन कम वर्ड्स एंड सेंटेंस. जेमति लेटर मेथड प्रथम सी ए टी तापर वर्ड शिखले समान कोन कैट. बट द डिफिकल्ट इज दैट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड इज नॉट
combination of sound of various letter constituting them. The phonic method. In phonic method, the pupil is first taught to recognize the letter of the alphabet and to associate them with their commonest sound equivalent to not other alphabet name B, C, etc. When the pupil has learned the recognized letter and associate with the commonest sound, he is taught to read phonically simple words like mat, man, son, etc. by synthesizing the various words. Then ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟପିକ କୁ ଯିବା କ'ଣ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନା the sentence method. Sentence method has been fully described as the reading preparatory reading. It enables to pupil to acquire correct pronunciation with proper stress, rhythm, intonation. As a result, student can learn skill required for good reading. The story method. The story method is an expansion of sentence method. The children are told a story 4 to 5 sentences illustrated through the picture. The children first learn the story by heart and then read it. Hence, they first recognize sentence, then individual word. The method is based on the belief that children are interested in the stories. Then ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ ର କ'ଣ ପ୍ରୋବାବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି. ରିଡିଂ ଏ ଟେକ୍ସଟ ୱିଥ ଅଡିବୁଲ that can heard sound is dash. Right answer is a oral reading. ଯେହେତୁ ଏଟା ଅଡିବୁଲ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ oral ହେବ. ତେଣୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ବି. 2 ନମ୍ବର oral reading inverse the process recognize quickly the printed and symbol and dash. ଯେହେତୁ printed and symbol କଥା କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ producing their sound from. Silent reading is going through a text without pronouncing word, now without pronouncing word either, or audible mainly or with audible articulation. निश्चित भाବରେ ऑप्शन बी without pronouncing word either जेहेतु साइलेंट रीडिंग होଉଛି ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ बी. ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତ ରିଡିଂ ଆଲାଉଡ୍ ଏମ୍ ଏଟ୍ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍. ରିଡିଂ ଆଲାଉଡ୍ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ତ ରହିବ ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରହିବ 4 ନମ୍ବର ବି କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ. ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା. 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ କଥା ଦିଆଯାଇଛି. ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟାରାକ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ଟେକ୍ସଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଡେସ୍. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂରେ ମେସେଜ ପାଇବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ବାଇ ରାଇଟର. ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି. ଦେନ୍ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଓରାଲ ରିଡିଂ ଏମ୍ ଏଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍. ଓରାଲ ରିଡିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ମେକିଂ ପ୍ରପର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟେକ୍ସଟ ଇନ୍ ଭାର୍ବାଲ ଫର୍ମ. 6 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ସି. ଦେନ୍ ଆସିବା 7 ନମ୍ବର. 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ଏମ୍ଫାସାଇଜେଡ୍ ମିନିଂ ଡ୍ୟାସ୍. ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂରେ କ'ଣ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ରହିବ ନା ରେଦର ଦେନ୍ ସାଉଣ୍ଡ. ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂରେ କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ବାହାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ରେଦର ଦେନ୍ ସାଉଣ୍ଡ. ଦେନ୍ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ଦି ରିଡର ଇଣ୍ଟାରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍. ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂରେ ରିଡର କାହା ସହିତ ଇଣ୍ଟାରାକ୍ଟ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଏଟ୍ ସହିତ କରିବ ଯେହେତୁ ଅପସନ ପୋଏଟ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦି ଟେକ୍ସଟ. 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିଡିଂ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍. ରିଡିଂଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଓରାଲ ରିଡିଂ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣାଯାଉଥିବା. ଡ୍ୟାସ୍ ମେଥଡ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଲେଟର ରିଲେସନସିପ୍. ଯେହେତୁ ସାଉଣ୍ଡ କଥା ଆସୁଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଦି ଫୋନିକ୍ ମେଥଡ. ଦେନ୍ ଆସିବା ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର. 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଇନ୍ ଡେସ୍ ୱାର୍ଡ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ଏଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱାର୍ଡ. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱାର୍ଡ କଥା ଅଛି ତେଣୁ ୱାର୍ଡ ମେଥଡ ହିଁ ଅପସନ ଅଛି. ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ୱାର୍ଡ. ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଡ ମେଥଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ ୱାର୍ଡ ଏଟ୍ ଏ ଗ୍ଲାନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଆନାଲାଇଜିଂ ଦି ଲେଟର.
now without considering the meaning, now without bothering the message, now without analyze the sound. In word method ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଟର ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ 12 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ, without analyzing them with letter. ୱାର୍ଡ କଥା ଅଛି, ଲେଟର ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ. Dash uses the sentence as the unit of alternance. 13 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦି ୱାର୍ଡ ମେଥଡ ନା ଫୋନିକ ମେଥଡ ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମେଥଡ. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମେଥଡ, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି 13 ନମ୍ବର ସି. 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଇନ୍ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମେଥଡ ଏଭ୍ରି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଚୋଜେନ୍ ମଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍. ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମେଥଡରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ଧାରଣ କରିଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି. 14 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡିଫାଇନ୍ ଇମେଜ. 14 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି. ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ମେଥଡ ଟିଚର ନେରେଟ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍. ଷ୍ଟୋରି ମେଥଡରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କରିବା, ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ. ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ମେଥଡ ଦି ଟିଚର ରିଡ୍ each story aloud and the pupil follow his reading with the book closed, with the book open, with half closed or half open. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହି ବନ୍ଦ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କରିବେ, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ 16 ନମ୍ବର with the book open. 16 ନମ୍ବର ବି, with the book open. ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଲିସନିଂ କରୁଛନ୍ତି ବହିରେ ପିକ୍ଚର ରହିଛି, ତେଣୁ with the book open. 17 number last question, in the story method learner are given various sentence. story method रे learner मानकु पिला मानकु various sentence दिया जिवो. ता कारण कोन? कारण होछि टीचर write them on the blackboard. blackboard रे किछि किछि sentence लिखि देले पिला माने sentence सहित acquainted हेबे, तेनु 17 number right answer होछि आपनकर ऑप्शन डी. then last topic रहछि development of writing skill. डेभलपमेंट राइटिंग स्किल रे आपनकर निश्चित भाବରେ जो थियोरी रहिছে ता ऊपर हम गुरुत्व दबा. देन प्रोबेबल क्वेश्चन देले आपनकर बीएनटी एजुकेशन माध्यम रे इंग्लिश पेडागोजी रो यूनिट 3 कंप्लीट होबो, आ गोटे मात्र यूनिट रहबो यूनिट 4. असंतु ताले देखिबा डेभलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल और टीचिंग कंपोजिशन. राइटिंग इज द फाइनल स्किल इन रेंज ऑफ लैंग्वेज स्किल. द इनपुट फ्रॉम द स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग are used in the skill of writing any output. When one write or express one's mind, heart, appropriate language with correct as well a beautiful expression. Accuracy is necessary for writing. Grammatical error, word order, tenses, articles, pronunciation, and concord must be reflected correctly. There are two types of composition: controlled composition and free composition. In control or guided composition, the pupil given a good deal help of reading structure and vocabulary item to be used in particular piece of writing. In free composition, pupil is free to make understand of any structure and vocabulary item that he or she like. Then परवर्ती टॉपिक आलोचना करिवा. देखंतो आ अल्प थियोरी रहछि गाइडेड और कंट्रोल composition. Guided and control composition is that composition where the student can have guidance of idea, vocabulary, structure, etc. Here a very controlled situation is presented to the student. They have to speak strictly according to the situation by using vocabulary, and they are asked to write. Principle of guided or control composition. The topic is chosen according to mental level of the learner, so they show maximum interest in it. The teacher explain to the student details of topic so that they may be fully familiar with. The teacher prepare guided according to which student move or without facing any short problem. Vocabulary, structure, etc. are given by the teacher, and the learner has to use them in the way and required by the teacher. All work is done orally, and then writing work is carried on. Then guided composition can be done by the following exercises: situation table, transcription, dictation, transformation of sentence, composition of incomplete sentence, and reproduction like reproducing a situation, reproducing a picture description, reproducing answer, reproducing a story. Then free composition rahila. Free composition means doing composition work freely. In the free composition, the learner is free from the
boundary of vocabulary, structure, idea, etc. The principle of free composition. There are no restriction of pupil for use of vocabulary and structure. There are no restriction on the length of composition. Pupil are totally free track to topics set there. Pupil are forced to think freely. Type of free composition: paragraph writing, letter writing, essay writing, descriptive writing, application writing, narration writing, story writing, and preface writing. Then probable question कौन रही? Now, writing is the final skill in the hearance of days. Option रही आपणकर oral, speech, application and language. Then right answer होची option D, language skill. एक नंबर right answer होची option D. Then one can judge the personal of writer by means of careful analysis of his or her days. Right answer होची option B, written text. Then 3 number question रही in the narrative text. The style of writing is basically dash. Story na event na sequence na using linkers. Right answer होची आपनकर event writing. Then asantu 4 number question को जिवा. 4 number question होची a paragraph writing contain a topic sentence which is dash. Paragraph writing रे topic टा कौन रहिबो? ना देखंतु right option 4टी option रही sum of the details, carries the main idea of the paragraph, highlight of the spots. तेणु कोटा रहिबो ना right answer हबो आपनकर 4 नंबर रे right answer होची option B, highlight supported details. तेणु right answer होची 4 नंबर रो आपनकर 4 नंबर B, carries the main idea of the paragraph. Then परवर्ती प्रश्न रहे 5 नंबर रे paragraph takes many qualifying sentence dash. तेणु 4टी ऑप्शन रही A, B, C, D. 4टी ऑप्शन भीतर 5 नंबर राइट आंसर हबो which support the main idea as reflected by the topic sentence. Then 6 number asking people to do free composition at the early stage is like dash. Early stage रे आपनकर free composition रे कौन रहबो 6 नंबर राइट आंसर होची C, asking them to run before having learned to walk. Then asantu 7 number प्रश्न. 7 number प्रश्न रहउची one of the aim of teaching English is to enable the pupil dash. ना 7 number right answer होची D, आपनकर to express himself correctly in writing or matter of everyday life. Then asantu आसीबा 8 number प्रश्न in writing story at the early stage picture are presented and dash. Picture गुडाक प्रेजेंट करा जिवो कोन करा जिवो 8 number right answer होची ऑप्शन बी, क्वेश्चन आर आस्क्ड. पिक्चर देखा जिवो क्वेश्चन पचारा जिवो. 9 नंबर क्वेश्चन होची व्हाइल राइटिंग स्टोरी डैश. ना व्हाइल राइटिंग स्टोरी आपनकर वेरी शॉर्ट सेंटेंस आर टेकन फर्स्ट. राइटिंग स्टोरी छोटो छोटो सेंटेंस गुडाक आगे निया जिवो. देन शेष क्वेश्चन फ्री कंपोजिशन मींस डैश. ना फ्री कंपोजिशन मींस होची आपनकर डूइंग कंपोजिशन और राइटिंग फ्रीली. ये थिला आपनकर यूनिट 3 रो थियोरी एवं प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर. दीर्घ समय धरि आपण माने मो बीएनटी एजुकेशन सहित जड़ित थिबार आपनको बहुत बहुत धन्यवाद. पुणी देखा हबो इंग्रजी पेडागोजी रो शेष यूनिट 4 रे. सेतेबेला पर्यंत विदाय. जय जगन्नाथ, नमस्कार.